या गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन अगेन। आज भी हमने जो देखा वो प्रीवियस व्हाट्स हैपनिंग फॉर द लास्ट 2 डेज वो रिपीट था कि मार्केट कहीं ना कहीं प्रीवियस डे का गैप भरने आ रहा है बिकॉज ये जो नई क्लोजिंग आया सीएस उससे क्या लास्ट लास्ट में एक बड़ा स्पाइक आ रहा है। आज भी सेम देखने को मिला। कल आज की ट्रेडिंग पैटर्न भी सिमिलर थी, भले मार्केट कहीं पे भी खुला बट अल्टीमेटली कल का गैप भरने को आया। डिड एनीबडी नोटिस दैट? या आइदर गिव मी अ यस और अ नो फ्रेंड्स, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा। या विजय? Okay, so I'll read out the disclaimer and then we'll start the session. So let me also start the session on my mobile. Yeah, it's there. So this is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. So let's start. So I'll go to my platform, which is Incred Money. One thing I would like to say, देखिए futures में that move is not happening because futures closing is over here. Okay. Yeah, Dheeraj, I was just waiting for you all to join. So what worked? देखिए अगर आज आपने futures का चार्ट खोला होता ना, so prices did fill the gap और वहां से आपको एक मूव आया. What we discussed in the morning, we said let us use the futures chart. तो यहाँ पे आपको करीब करीब 100 पॉइंट का मूव मिला है. How many of you observed that? Let me see if you give me either a yes or a no. How many of you observed that? So we'll stick to this pattern. We'll use futures chart for some time being till we don't come to a conclusion. Atul, देखा आपने futures पे morning we had decided we are going to use futures chart for intraday. So that's what it has decided. In the same way, had I used the Nifty spot, see this move I got only after the close, right? And somewhere down the line, if I waited for this gap over here, I would have missed my trade. Or I would have taken this full gap. Still, I would have missed the trade. So somewhere down the line, ऐसा लग रहा है कि हमें इंट्राडे पर्सपेक्टिव से futures chart करना पड़ेगा. But how do you analyze closing? Yeah, closing candle to me has no relevance in terms of hammer or this or that. Absolutely. So that's why the averages and all we can see it in the spot, but when it comes to the patterns, we'll have to Madhur either rely on Sensex because there is no change over here, right? Or we have to rely on futures, Madhur. Got it, Madhur? Yeah, good afternoon, Najib. So वही नजीब मैं बात कर रहा था अभी कि जैसे हमने मॉर्निंग में डिसाइड किया था फ्यूचर्स का चार्ट देख के हम अपना वी विल फॉलो द मार्केट्स वर्कड आउट वेरी वेल टुडे. बट मार्केट्स आर मार्केट्स. हम लोग देखिए कैंडल भूल जाते हैं, अगर प्राइस स्टैम्प आया है तो आया. सो नाउ जैसा हमारी कल बात हुई थी इन दिस सेशंस वी हैड सीन दैट दिस गैप ओवर हियर and till this base is not breaking, which is the candle which created the gap, ये मेरा सपोर्ट है. आज भी मार्केट जब डिप आया था it took support over there. So we are just focused on these two levels. Right? Now in between what else is we can apply? बीच में हम क्या डाल सकते हैं बोलने के लिए कि ये सपोर्ट पहले नहीं टूटेगा एंड मार्केट में गो अप. द फर्स्ट थिंग वी आर यूजिंग इज द 200-day मूविंग एवरेज which is the exponential. Why exponential? That is before the simple. अभी देखिए मूविंग एवरेज इज बेस्ड ऑन, देखिए मूविंग एवरेज में भी अगर आप मार्क करो तो देयर हैज बीन सम डिस्टॉर्शन. ओके, स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड. वन सेकेंड, आई थॉट आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन. देखिए मूविंग एवरेज में भी डिस्टॉर्शन तो आया बट वी कांट कॉल इट डिस्टॉर्शन. ऑफिशियल क्लोज एंड वॉट एवर इज द ऑफिशियल क्लोज विल हैव टू फॉलो, राइट? सो द देखिए पहले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अब मार्क करो, इट वाज समवेयर हियर, नाउ इट इज एट दिस हाई. सो रेजिस्टेंस इज फ्रॉम द 200-day मूविंग एवरेज विच इज एक्सपोनेंशियल. इसको अगर सिंपल करूँ तो
Both are coming same. Let me check. Yeah, I think now everything is fine. This is the exponential, which is 200 DMA. No, so let us take this as only correct one. So ये exponential average is likely to be my support. एंड एक्सपोनेंशियल एवरेज का एक रेलेवेंस रहता, यहाँ पे जो गैप था थोड़ा बहुत गैप भरा हुआ है, तो जब तक ये पूरा गैप के नीचे क्लोज नहीं आ रहा ना, मैं इसको एक ट्रेंड सपोर्ट मान के चलूंगा. And on the upside there is a gap over here, ये वाला गैप. सो टेंडेंसी ऑफ प्राइसेस आर टू फिल द गैप्स, बट ये रेंज काफी बड़ी है. 24,300 से लेके 25,000 तक, 700 पॉइंट एक दिन में तो आएगा नहीं, बट दिस इज द रेंज विद मार्केट विल ट्रेस इट आउट. Got it, everybody? This is the range with closed in small profit. That's great, Yeju. Did you follow the futures chart that we had discussed in the morning today? So that's how we'll have to analyze the markets. Daily now we are getting a hammer candle. Yeah, that's great to know, Yajur. What more we can do over here? Let me plot my Bollinger Bands. If I see on the Bollinger Band, market is stretching, it's overbought. So देखिए open हो रहा market and then again it's cooling off to the gap. So net market is not going anywhere. See, weekly band bhi yeah, before that gap gets filled, I would put my resistance at this upper end of the weekly band, which is 24,800. As I said yesterday, from here on we are going to follow this pattern. सो 24,800 का जो निफ्टी है वो एक स्तर है जो कि अपर बोलिंगर बैंड पे ओवरसोल्ड है. Now, whenever market takes a pause, always remember this. There is something called an ABC. एक बार market अगर pause लेता है, so as a trader, this pause could be like this. It goes up and comes down. That means a red candle marks a high. Right? Or after the pause, if it takes out the last high, that means it's turning out to be a fresh leg up. Got it, everybody? From here, it was a fresh leg up. Clear? So right now, हम लोग यहाँ पे भी एक सेम सिचुएशन में है. मार्केट ने एक पॉज लिया है. ये पॉज के बाद अगर हाई निकल जा रहा है तो फिर से हम ऊपर का स्तर देखेंगे मार्केट में. Till that point of time, it's going to be the consolidation. Everybody got it? Give me a yes. इसी पैटर्न को हम ABC बोलते हैं. So let me show you. ये जो ABC यहाँ पे ना, इसको ABC बोलते हैं. राइट, बी छोटा होता है, अदरवाइज लंबा गया तो बी बड़ा होता है. क्लियर एवरीबॉडी? सो वी डोंट नो वेदर बी इज ओवर एंड सी हैज स्टार्टेड. वो लास्ट हाई निकलेगा, उसके बाद ही पता चलेगा. बट सी, एक ही कंक्लूजन यहाँ पे निकल रहा है कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट लगातार 4 दिन बंद हुआ. All the 4 days, the dips towards the gap, there was a support and market bounce from there. तो 24,300-400 का रेंज को आप सपोर्ट लेके, स्विंग सपोर्ट लेके पॉजिटिव साइड चलो. Everybody clear about this? That's the only thing we can conclude. Okay. बट एक चीज है कि आज का जो क्लोजिंग था वो थोड़ा कम था, कहीं ना कहीं मार्केट इसको एडजस्ट कर लेगा. Yeah. So it's a candle with a tail on the downside, which signifies buying pressure. Now, अभी यही कैंडल को अगर मैं इंट्रामेडे में देखूं तो 2 दिन से देखिए, कल परसों का कैंडल बहुत बड़ा था, आज थोड़ा छोटा आया. दैट मीन्स मार्केट इज एडजस्टिंग इटसेल्फ. तो लेट्स एक्सेप्ट इट. सो ये गैप अभी भी थोड़ा बाकी है. सो ये वीकली गैप है विच इज स्टिल इंटैक्ट. So this is how Nifty is positioned right now. The swing is up. Current upswing में क्या चल रहा है? See the current. This is the swing up, right? Upswing में what's the pattern right now? Upswing,
और सब पैटर्न क्या है? अपस्विंग में कंसोलिडेशन चल रहा है, रेड कैंडल। और थर्ड कंक्लूजन क्या निकल रहा है? द गैप plus the 200-day exponential moving average is giving us the support. ये तीन चीज खुल के आ रही है. Got it? Give me a yes if it's clear to all. Note down कर लो सब कोई. Everybody please note it down. So that's the trend direction. Within the trend direction, we are consolidating with supported gap plus the 200-day exponential moving average. So that's how the Nifty is positioned right now. सो लोअर लेवल्स पे सपोर्ट है, बिकॉज कभी भी हम देखें जब गैप बन रहा है तो गैप का सपोर्ट हमें मिल रहा है, तो ये सपोर्ट भी हमें आज की तारीख में मिल रहा है. आफ्टर दिस लेट मी गो टू द बैंक निफ्टी पार्ट. बैंक निफ्टी भी अगर 200 डीए ईएमए यहाँ पे उसका सपोर्ट ले रहा है, अगर मैं सिंपल डालू बैंक निफ्टी पे विच इज 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, दोनों डालो जो पहले आएगा उसका रेलेवेंस है. So if I look at 200 SMA, so अभी आज का भी low was exactly 200 SMA. Did anybody remember that? We had discussed this in the morning. I said drop a line on your intraday charts around that. Had you dropped the line, आज का low पकड़ में आता आपको. ये सब छोटी छोटी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी. देखिए जब मार्केट नीचे आया ना तो एग्जैक्टली 200 डे पे सपोर्ट लिया और वहां से करीब करीब आपको 200-300 पॉइंट देके गया. गॉट इट एवरीबडी? देखिए मार्केट अंदाज में कहीं से भी नहीं घूमता है सर. यू शुड बी अवेयर ऑफ यू व्हेन द इंपॉर्टेंट एवरेजेस रन ऑन योर करंट प्राइस चार्ट. सो वो 200 डे का सपोर्ट लेके चला. ऑल गिव मी अ यस इफ यू हैव गॉट इट वेरी वेरी क्लियर फ्रेंड्स. I'll wait for your yes. Vijay says yes. Okay. So now बैंक निफ्टी ये 200 डे का सपोर्ट है प्लस ये बेस है, तो ये बहुत लंबा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए. और ऊपर में देखिए ये हाई अभी तक क्रॉस नहीं किया, समवेयर डाउन द लाइन वी आर रेंज बाउंड विद अ पॉजिटिव बायस. गॉट इट? दैट्स बैंक निफ्टी. अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो हमें एचडीएफसी बैंक देखना जरूरी है बिकॉज वो हैवी वेट है. एचडीएफसी बैंक मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है कि वो जो बेस है वहां से सपोर्ट लेके एचडीएफसी बैंक एक छोटा बाउंस दे रहा है. ये करीब अप्रैल का इस्टेब्लिश्ड सपोर्ट है. देख रहे हो आप सब? बीच में भी जब बैंक निफ्टी ने उछाल मारा तो एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट किया था, फिर यहाँ पे भी कहीं पे इसने सपोर्ट लिया, फिर वापस से डिक्लाइन पे यहाँ कहीं सपोर्ट लिया. तो अभी देखिए बोल नहीं सकती है सपोर्ट इस्टेब्लिश हो गया कि टूट जाएगा. द मोमेंट एचडीएफसी बैंक्स ब्रेक्स दिस हाई ना, तो देन ओनली बीइंग अ हैवी वेट, इफ द हैवी वेट इज ब्रेकिंग द हाई, तभी हम बैंक निफ्टी का हाई एक्सपेक्ट कर सकते कंसोलिडेशन ब्रेक का. गॉट इट एवरीबॉडी? या तो अगर ये सपोर्ट 730 वाला टूट भी नहीं रहा है तो ये रेंज बाउंड हो जा रहा है जब तक ये हाई नहीं निकल रहा है, बिकॉज ये हैवी वेट है. जब तक हैवी वेट में उछाल नहीं आएगा ब्रेकआउट सस्टेन्स नहीं होते. रिमेंबर दैट रोटेशन में मार्केट रेंज बाउंड रह सकता, इट कांट ब्रेक द रेंज. एवरीबडी गिव मी अ यस. रोज आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट हम रोज देखेंगे. एस्टैब्लिश्ड सपोर्ट है यहाँ से मल्टीपल टाइम्स, और ये 2023 का 24 का सपोर्ट है. मल्टीपल टाइम्स यहाँ से एचडीएफसी बैंक घूमा है और वापस सेम लेवल पे आ गया. तो ये एक निर्णायक लेवल है बैंक निफ्टी के लिए. बट जब तक ये हाई नहीं निकल रहा ना तब तक जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको चाहिए. देखिए एचडीएफसी बैंक एज्यूमिंग इट टेक सपोर्ट ओवर देन कम बैक्स हियर, वो बैंक निफ्टी को ऊपर के कंसोलिडेशन बैंड तक ही लेके जाएगा. दैट्स इट. ओनली अ ब्रेकआउट ऑन द एचडीएफसी बैंक, आई वुड से बैंक निफ्टी इज पोइज्ड फॉर सब्सटेंशियली हायर लेवल्स. R. Senthil Kumar says, sir, 8 hold Nifty 250 now immediately. Please advise. All we do is for educational purpose, sir. There is no advice I can put. See, what we do is getting a foundational knowledge, work upon this, watch the recording, see how you conclude. Fine. The whole aim is you start thinking on your trades. So that's HDFC Bank. और दूसरा जो आपको heavy weights देखना है, which is Reliance. We'll watch both the stocks for directional view on the markets. Reliance भी कहीं ना कहीं
देखिए जैसे HDFC का एक बेस है ना, वैसे रिलायंस का भी एक बेस है. मल्टीपल टाइम्स रिलायंस ये बेस से घूमा. जस्ट वॉच दिस. अगेन इज कमिंग बैक टू दिस बेस, और ये बेस प्रीवियस एक सपोर्ट का एस्टैब्लिश्ड है समवेयर अराउंड दिस लेवल. तो ये दो लेवल्स आर, these two stocks are a very big momentum for the markets. Getting my point? Yes, and our Senthil Kumar sir, no offense, it's we just do the foundational part. Start thinking. If you are still stuck, Senthil, talk to me in the morning sessions. Ask questions. I'll clarify it. End of the day, you have to take your decisions, right? For that, whatever support you require from our side, we are there for you. So HDFC Bank and Reliance both coming at the base. So keep a watch on this. So ये बेस पे ये एक सपोर्ट है रिलायंस का, मल्टीपल टाइम्स होल्ड किया, और ऊपर में इट्स रेंज बाउंड. अगर देखो तो रिलायंस इज अल्टीमेटली रेंज बाउंड है. सो दीज टू स्टॉक्स आर होल्डिंग द की फॉर द मार्केट, बिकॉज देखिए दोनों को मिला के आई गेस मोर और लेस अप्रोक्सीमेटली 20% का वेटेज है, विच इज टू बिग. फाइन. Subhash Patel 93. What about Paytm? Be there tomorrow morning at 8:45, sir. We'll discuss Paytm. Here we discuss Nifty and the broad. Definitely, I'll take it and I'll look at the chart. See, I can't immediately talk about Paytm. I'll spend 15 minutes, half an hour on the charts, Subhash Patel. And then whatever I come to know about it, I'll tell you tomorrow morning, 8:45. Okay. So that's all for the markets today, friends. Thanks. Have a nice day. Again, we'll meet tomorrow at 8:45 in the morning. And our plan of now shifting from the spot charts for day traders to futures chart have worked well. How many of you agree? Those who followed this, let me see. If it agrees, if it works for you, then only it makes sense. But मैंने जो आज देखा, उससे मुझे ऐसा लगा ना, it worked. Yeah, Madhur is saying it worked. It works. So I'm honestly following the futures charts. Right? Take your strikes, ATM, OTM, one from spot, and keep currently for direction your futures. So that's all from my side, friends. Thanks. Have a nice day. We'll again meet tomorrow. Plus, the last session on swing down and top down approach was cancelled because of technical reason. The same session we are having it tomorrow from 4:30 to 5:30. So I have pasted the link. If anybody is interested, do register. Do send it to your friends. Anybody who wants to learn top down approach, full 1 hour, I'm going to spend over there. And top down approach is very, very relevant and very important for swing trading, and great for day trading also, because if you don't have a clarity on the swing trading कि 2-4 दिन में market क्या लग रहा है, it would be too tough for you to even day trade. So it's a top down approach is your foundation. So Vijay Praveen registered. Those who have not registered, I'm keeping the window open. And let's make a community of Trading Titan grow bigger with like-minded traders coming together. So make sure you can forward the link to anybody who's interested. I expect you all to at least forward it to 3 to 4 of your trading friends. Let's everybody benefit from the knowledge which we discuss and share. And that's how our community, that's what our community Trading Titan is all about. We come together to share our knowledge. Fine. So kindly confirm how many of you will get 1 to 2 of your friends or trading friends tomorrow for this session, or it could be family members who are interested in trading. So make sure registered. That's great. So Abhijit, I would like you to forward it to somebody who's interested in this subject, because you see these sessions happen and you are there right now, but somebody if you know is really interested in trading, वो अभी यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका जिम्मेदारी बनता है कि you help him out by sending the link and let him register. So that's all from my side, friends. Thanks. Have a nice day.